name Amina. ये contradiction है. First paragraph, line number 4, and first paragraph, last line. ठीक है. This contradiction troubled a young student named Amina who decided to act. और ये सारी situations जो है एक young student अमीना वो सब कुछ इसको like she was monitoring all these situations and she was trying to realize all these situations, or she decided to act against this because that is one of the most global problem, and still no doubt it is. So Amina decided to take a step toward it. ठीक है. Second paragraph. Instead of simply complaining, Amina gathered a group of friends and started a project called Food for All. एक मिनट. तो अमीना instead of simply complaining, ठीक है, तो अमीना ने क्या किया? She gathered a group of her friends and started a project. एक voluntarily project उसने start किया, and it was, the name of that project is Food for All, right? They partnered with the local restaurants and grocery stores to collect surplus food that was still safe to eat. क्या किया उन्होंने? They contacted the different restaurants and especially the grocery stores, mean the supermarkets here, and they started collecting those food that they usually discard them, and इससे हम कहते हैं यहाँ पे उन्होंने discarded food को surplus food, यानी जो extra food थे जो उनको discard कर देना था, तो उसको उन्होंने start किया gather करना, और उसी food को जो कि like you can say they are you can say they are capable to be eaten, not those food that is not capable to be eaten. ठीक है. So eatable foods को उसने save करना शुरू किया उन दुकानों से या उन shopping malls से. With the help of volunteers, they packed the food into the boxes and distributed it into the shelters and families in need. और फिर उन food को उन्होंने pack करना शुरू किया boxes में. Obviously ये अलग खर्चा था, ठीक है, but they started volunteering this work. So like they started gathering this food, started packing it and providing it to the needy families there, and especially to the shelters में जाया करते थे, slums में जाया करते थे. ठीक है. Slums is all about कच्ची आबादी को कहते हैं. Paragraph number 3. At first the project was small, ठीक है, serving only few dozens of people. बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, छोटा project था, बहुत ज़्यादा लोग को वो serve नहीं कर सकते थे. But soon the idea spread. लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अच्छा काम था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, idea got spread. More business joined in, citizens volunteered their time and the local government offered support. और पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता बहरहाल, ठीक है, कि और ज़्यादा बिजनेस आने लगी, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज़ ने उनको ज्वाइन किया. ठीक है. बहुत सारे लोकल बिजनेसेस ज्वाइन का मतलब यहाँ पे लोकल स्टोर्स ने ज्वाइन किया. ठीक है. ग्रोसरी स्टोर्स ने ज्वाइन किया. सिटीजन्स ने वॉलंटियर किया, खुद को अपना टाइम दिया उन्होंने विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम देम. ठीक है. एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड देम फॉर द हेल्प. विदिन अ ईयर, एक साल के अंदर फूड फॉर ऑल हैड ग्रोन इनटू अ कम्युनिटी मूवमेंट. और ये जो फूड फॉर ऑल कम्युनिटी था, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वॉलंटियरली शुरू की गई थी, ये एक कम्युनिटी मूवमेंट का शक्ल इख्तियार कर गई. मीन्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई. हेल्पिंग नॉट ओनली टू रिड्यूस हंगर बट ऑल्सो टू कट डाउन द अननेसेसरी वेस्ट. और इसके दो मकासद थे. वंस कि इसका मकसद सिर्फ लोगों के भूख को मिटाना नहीं था, बट ऑल्सो टू कट डाउन द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ फूड भी था. ठीक है. Last paragraph. Amina's initiative showed that change begins with the small steps. अमीना का जो ये छोटा सा इकदाम था, वो ये शो करता है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए उसको पहले छोटे से शुरू करना पड़ता है. As Amina did. While food waste may never disappear entirely. हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अमीना के इस प्रोजेक्ट के बाद पूरे मुल्क में जो है वो फूड वेस्ट होना बंद हो गया. ऐसा entirely पॉसिबल नहीं था, लेकिन एटलीस्ट शी टुक द इनिशिएटिव. हर प्रोजेक्ट रिमाइंडेड पीपल दैट रिसोर्सेज शुड बी रिस्पेक्टेड. उसके प्रोजेक्ट ने, अमीना का जो ये प्रोजेक्ट फूड फॉर ऑल था, ये लोगों को
क्या दिया लोगों को, जो रिमाइंड करवाया, ये रिमाइंड करवाया कि you should respect the resources, whatever the resources you have got available with you, so you should respect those resources, shared and used wisely. और उसको ना सिर्फ आपने wisely shared करना है बल्कि use भी करना है. In that end, it was not just about feeding the hunger, और in the last ये सिर्फ एक cause नहीं था to feed the hunger, but about building a culture of a care and responsibility. और आखिरकार I mean in the last जो है ये एक culture of care and responsibility भी बन गई थी कि एक responsible citizen की क्या responsibilities हो सकती है, एक healthy culture का क्या environment हो सकता है. और healthy culture का environment यही सबसे बेहतर हो सकता है कि you have to help others, especially help out the needies. That is the most important thing. ठीक है. So this is a very small paragraph, though it looks very like क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा easy है, लेकिन I'm not sure about your critical questions, type of questions here. Why is food wasted described as a silent crisis in the passage? ये तुमको find out करना है. What qualities did Amina demonstrate by stating food for all? Very important question. What qualities? You should answer this question all by yourselves. How does the project benefit both the environment and the society? I have already told you in my explanation how it did it. Do you think individuals can make a real difference in solving global problems? Of course, according to me, yes, but I don't know according to you, what is it? Give reasons for your views, and give reasons. If your reason would be like justifying the paragraph, that would be much better, right? You can use some of the examples from the paragraphs here. If a similar project were to start in your community, how would you contribute it to its success? It's another question, okay, and it requires all the answers all by yourselves, okay. I don't think that there are, you would need this part, vocabulary with the meaning, okay. इसको कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है. So next time you'll be having a little bit difficult, थोड़ी ये तो एक warm up था ना, later on you'll be having a difficult paragraphs there, ठीक है. अच्छा, if you have any queries, please like unmute your mic and directly ask me the questions here, whatever the questions you have got, please. Yes, any questions? You can please ask me. No questions. That means you are ready to solve your exercises. So go ahead, start. You have some time, so start producing your answers. Go ahead.